right, let's see the question. This came in 2011. I guess आपका political theory के अंदर आ जाता है this subchapter. Karl Marx explained the process of class struggle with the help of which of the following theories? 2011 में आया था. First is empirical liberalism. The second is existentialism. Then you have Darwin's theory of evolution, and the last choice is dialectical materialism. All right. इसका आंसर है टी. All right. जिसको रटना है रट ले. My advice समझ लेते हैं. One more thing. जब भी मैं आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन कराऊंगा ना, so I will not just do the correct answer choice. हम सारे के सारे choices will try and cover them कि भाई ये सही नहीं है तो ये गलत भी क्यों है, because tomorrow उसी गलत आंसर चॉइस पे क्वेश्चन बन सकता है. तो आपका काफी सारा कोर्स ऐसे ही कवर हो जाएगा. ओके, कार्ल मार्क्स वाले पे क्या कर रहा है? हाँ जी. Karl Marx explained the process of class struggle with which of the following theories? For students who are not political science students or history majors, थोड़ा सा background. Karl Marx is said to be the father of communism, right? इनकी बड़ी फेमस किताब आई थी एक, दास कैपिटल, and something very interesting about him. This book was very very famous. And एक और थी ना, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो. Communist Manifesto. So, brief background about the gentleman. Karl Marx, father of communism, and wrote these two books, Das Kapital and Communist Manifesto. I'll tell you something very interesting about him. A lot of people don't know. This gentleman was a German who was exiled. This fellow was a German who was exiled to England and then this is really fun, caused a revolution in Russia. Exiled का मतलब होता है काइंड ऑफ जो politically inconvenient people होते हैं, उन्हें अगर जेल वेल में नहीं डालना for whatever reason, तो उनको बस कहते हैं भाई डिपोर्ट कर देते हैं. द गवर्नमेंट ऑफ द डे, जो ऐसे लोग इन्हें पसंद नहीं आते, उनको गवर्नमेंट पे कहती है भाई तुम्हें हमने पकड़ के हमने एक्साइल कर दिया, डिपोर्ट कर दे, तो दूसरी कंट्री में फेंक देते हैं इन्हें. वहाँ पे इन्हें जो करना है करें, बट हमारी कंट्री से दूर. तो यहाँ पे वो ज़्यादा शोर शराबा नहीं करते हैं. यहाँ पे अगर जेल वेल में डाल दिया या एग्जीक्यूट हो जाता है, असैसिनेट हो जाता है, क्रिएट्स मोर हैसल एंड मोर पॉलिटिकल हेडेक फॉर द गवर्नमेंट. Exiled. So I've told you very briefly about Karl Marx over here. Okie dokie. So he explained class struggle in terms of कहाँ खड़े हूँ मैं? हाँ जी. He explained class struggle in the form of which of the following? Empirical liberalism, existentialism, Darwin's theory of evolution, and dialectical materialism. So the answer choice is D. ये सब गलत हैं. We will go one by one and also explain why are they wrong. First of all, simple वाला ले लेते हैं. Darwin's theory of evolution. भैया कार्ल मार्क्स और Darwin's theory of evolution से कुछ connection ही नहीं है. Okay, not connected at all. Darwin ने theory अपनी बताई है. Human came from apes. He went to Galapagos Islands वगैरह वगैरह. वहाँ पे वो गए थे, उन्होंने study करा and came out with this book. चलिए जी बताइए. डार्विन जी की फेमस बुक का नाम. चलो आपकी जीके भी हो गई. ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज.
and he went to the famous Galapagos Islands. इसका कुछ खास रेलेवेंस है नहीं अभी, बट मैं फिर भी लिख दिया आपके साइड में, साइड थोड़ी जीके भी होगी. Galapagos Islands to explain the concept of evolution. तो this तो is definitely out. Evolution and Karl Marx का कोई connection ही नहीं है. Existentialism. Existentialism, as you can imagine, the key word is exist. आप लोगों ने आजकल बहुत सुना होगा that so and so political party is facing an existential crisis. So I'll write it down over. कहाँ लिखा है? है लिख देता हूँ मैं. Exist. ये you can use this word for existential crisis. कभी global warming पे आपका ऐसे तो आया तो existential crisis. Exist. ENTIAL. Existential crisis. Should I write it down a little better? This is a new word. I don't want anyone to be confused in this. Exist. ENTIAL. Existential crisis. Existential crisis means again regarding ऐसी कोई crisis की मतलब उस person का, उस बंदे का existence threaten में आ जाए. For example, human beings are facing an existential crisis in the form of global warming, or COVID pandemic was an existential crisis faced by humanity. Existentialism is a political theory which deals with, why do we exist, what's the purpose of existence, वगैरह वगैरह ऐसे करके. So all about existence and the purpose of it, the cause of it, वगैरह. That obviously means it has nothing to do with Mr. Karl Marx. Cancelled. Empirical liberalism. Liberalism, again, everyone knows, it just simply means tolerance to everyone and respect of their freedoms. Empirical means mostly based on data and statistics. So empirical liberalism हुआ भी, we are liberal to everyone and we are basing it on proper data वगैरह and सोच समझ के and all that. It has nothing to do with Mr. Karl Marx, so this chapter is also cancelled. Hence the answer choice D for donkey is correct. Dialectical materialism. Karl Marx ने explain करा था class struggle का concept with the help of dialectical materialism. Now मैं आप लोगों को 2 मिनट देता हूँ, just a couple of seconds, just note down everything because I need a fresh screen to explain dialectical materialism to you. So I'll just move on the side and you all can take your time. Okay जी, now I'm going to clear out the screen. This is your answer choice. Dialectical materialism. Let's break this down. It sounds very fancy, right? Doesn't need to be. The good thing about political science and constitution and polity, it's all very simple. It's all emanating and coming out of the brains of human beings from simple concepts. So उसको थोड़ा package कर देते हैं these fancy words, but its concepts are very simple. Dialectical materialism कर लेते हैं. First to materialism. Materialism का मतलब वही है भाई, the philosophy of desiring and having material wants and needs. Wow. 1 second, guys. Simple example being, I want a TV to watch IPL. I want
and AC to relax in the summers. Materialism, I want material things, I want material goods, I want to feel, comfortable and all right. Now we come to this fancy word called dialectical. Dialectical कहाँ लिखा जाए, मैं वहां कर देता हूं उसे. Means concerning opposing forces. It also means regarding back and forth of ideas, but उस definition को अभी हम एक सेकंड के लिए हटा देते हैं, ठीक है. Dialectical आपको याद करने का सिंपल तरीका ये ले लो ना, ऐसे आप relating to a dialogue. Dialogue होता है ना, the talk between two people. Dia, two, log, talk. So dialectical relating to a dialogue, relating to opposing forces, कि भाई वहां से कुछ आ रही है फोर्स, यहाँ से कुछ बैलेंस उसकी तरफ जा रहा है, वहां से बैलेंस आ रहा है, यहाँ से कुछ फोर्स जा रही है, that way. Dialectical. So Marx explained, in fact I tell you what, इसमें एक और कर लेते हैं. ग्रीक, ओहो बहुत सेंसिटिव स्क्रीन है, इसकी हल्की सी एटिमोलॉजी कर लेते हैं. इफ यू कैन सी दिस, ग्रीक डायलेक्टिक मीनिंग डिबेट. आपको और अच्छा थोड़ा याद हो जाएगा ये. हाँ जी, relating to dialogue, relating to debate, बस most important relating to opposing forces. अब दिख रहा है तो debate and dialogue भी और होता क्या है भाई, एक बंदा डिबेट, दो लोग डिबेट कर रहे हैं, तो एक बंदा कहता है मेरे ख्याल से ए है, तो एक तरह से फोर्स गई. दूसरा वाला कहता है मेरे ख्याल से नहीं, ए नहीं है, अपोजिंग फोर्स गई. मेरी तरफ से बी है, ए वाला उसे अपोज करता नहीं, ए ही है फॉर दैट रीजन, है बी नहीं है फॉर दैट रीजन. ओके, मार्क्स एक्सप्लेन्ड क्लास स्ट्रगल विद द हेल्प ऑफ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म कि भैया अपोजिंग फोर्सेस of this person wants that, this person wants that, the upper class wants that, the middle class want that, the lower class want that, ऐसे करके. So उस वक्त is mostly between the big fat business people, the bourgeoisie, and the proletariat, the workers. तो उनके बीच में जो force आई कि भाई the, for example, factory owner ले लेते हैं. In fact, I should explain this. कार्ल मार्क्स ने जब usually अपनी किताबें वगैरह लिखी थी ना, so he said that उनके टाइम पे ना पोल्यूशन वगैरह एंड लेबर राइट्स बहुत वायलेट होते थे. A lot of people working in the factories and the dockyards वगैरह, they used to die of pollution and this and that. तो इस वक्त ये तो तरीका गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए. The factory owners and the mill owners वगैरह वो लोग तो बहुत रिच हो रहे हैं, ये लोग ऐसे जल्दी जल्दी मर रहे हैं. So again, this is kind of an opposing force कि factory owner for example बिल्कुल down to earth realistic example ले लेते हैं, वो कह रहे हैं भाई मेरे मटेरियल वांट्स, आई वांट अ फैंसी 5-star डिनर एवरी डे, आई वांट अ बिग हाउस, बिग मैंशन. तो वो अपना वांट मटेरियल डिजायर कर रहे हैं. दूसरी तरफ से जो हमारे लेबरर्स हैं उनके वो कहते हैं तुम इस हम वो सब चाहिए, उसलिए आप इतना काम करो, इतनी गंदी कंडीशन में, हार्श कंडीशंस में काम करो. द लेबरर्स आर लाइक कि भाई नो, दिस इज रियली डिफिकल्ट फॉर अस, वी आल्सो वांट मटीरियल वांट्स हमारी भी हैं. वी वांट अ कंफर्टेबल हाउस, कंफर्टेबल वेज, गुड एजुकेशन फॉर आवर चिल्ड्रन, क्लीन लिविंग. तो हम पुश बैक कर रहे हैं, हम इतना काम नहीं करेंगे. हम पुश बैक कर रहे हैं, हम ये अपोजिंग फोर्स दे रहे हैं कि हम इतने गंदे एनवायरनमेंट में काम नहीं करेंगे. दैट इज हाउ कार्ल मार्क्स एक्सप्लेन्ड द आइडिया ऑफ क्लास स्ट्रगल विद अपोजिंग फोर्सेस ऑफ एंड ईच फोर्स वांटिंग सम सॉर्ट ऑफ मटेरियल गेन. सिंपल. अब आप लोग ये बता दीजिए, जिंदगी में कभी आपको रटना पड़ेगा ये आंसर? If you understand it clearly and your concepts are clear, you don't need to रटो. जितना कम रटेंगे, जितना आपके
ideas clear रहेंगे उतना it will help you out and not just answering questions like these but also let's say जब आप ऐसे लिख रहे हो या कोई आंसर लिख रहे हो या इंटरव्यू में अगर एक टॉपिक आ जाए तो अब वहाँ पे आपको रटी रटाई थ्योरी दोगे जैसे वो 3 इडियट्स में वो भाई साहब थे ना क्या नाम था उनका मैं भूल गया अरे जो भी थे वो उन्हें कुछ मशीन डिस्क्राइब करने का पूरी डिक्शनरी डेफिनेशन दे देते हैं that doesn't sound too nice मतलब ये तो कोई भी रट के बता दे यार तो किसी छोटे से बच्चे को कभी डिक्शनरी का ये डेफिनेशन रट लो वो भी रट के बता दे विदाउट हैविंग एनी आइडिया सर पैर क्या है anyways so this is now clear to you I'm going to take a couple of seconds move aside you all can jot it down